Okay. Let us start the last part of D block elements. Okay. जो मैंने देखी अच्छा पढ़ी ऐसा जेटा ऑडिबल टू यू मैं ऑडिबल टू all of you. Okay. Last part of your D block element. Then we will go to F block element. These are compounds. This is the heading. That is compounds of transition metal elements. Okay. Just now, little bit time before, I have discussed these two compounds in color. That these are K2Cr2O7, K2Cr2O7. K2Cr2O7 is having +6 chromium oxidation state. I have taught you how to determine the oxidation state. If you have forgotten, just take a look carefully. You have 2K plus, that is 2 into +1 for potassium, 2 chromium, so 2X, 7 oxygen, 7 into -2. Whole compound is neutral, so you will find X as +6. So oxidation state of chromium is your +6. +6 means chromium +6 has 0 electrons in d orbitals. That is 3d 0 oxidation electron and configuration, electronic configuration. Okay, now what happens? We are expecting this to be colorless. We are expecting, but this is not the scenario. This is showing you orange color. See the orange color. See the orange color. This compound is orange in color. Okay. Similarly, KMnO4. This is potassium permanganate. Potassium permanganate. Here you will find manganese has +7 oxidation state. It is 3d0 again, but it is colored. The color is purple, and the region for this color is your. I have told you repeatedly. This is due to charge transfer spectra. Charge transfer spectra. Okay, so let us move. आम दी प्रकार कंपाउंड पढ़ गया गुडे पढ़ गया ऑक्साइड्स जो गुडा कहे छिवे न्यूट्रल आ किछि पढ़ गया ऑक्सो आनायंस जो माने हेतिवे नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग आनायंस. This is oxygen containing anion MnO4 minus. Okay, MnO4 minus Cr2O7 minus 2 CrO4 minus 2. These are oxo anions. Mn2O7. This is neutral, but this is +7 means 3d 0. Its color is purple. These are neutral oxides. Okay, two types of compound we will see here. Okay, clear? Now see metal oxide.
Mn2O7, Mn2O7, CrO3. Metal oxides are formed by the reaction of metal with oxygen at a very high temperature. High temperature reaction होती है ऑक्साइड बनिଥାନ୍ତି ठीक ଅଛି सबा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एठी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है +7 गोटे कंपाउंड रहছে कि MnO2 7 +6 रे गोटे पाइছে Cr एथे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड +5 रहছে vanadium pentoxide V2O5 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि एमने अछंती MnO2 भीतर बहुत इंपोर्टेंट अब TiO2 MnO2 +3 रे एंट्री एगुडा ऑक्सीडेशन स्टेट रे भी कहथिली ठीक है so let us without wasting time let us move forward properties of metal oxide suppose हम एटा लेछे metal oxide लेछे Mn2O7 एमानकर प्रॉपर्टीज कौन कौन रखे they are ionic character रखिबो melting point विषय पढ़िया acidic और basic nature विषय पढ़िया सब गुडा का acidic है जाने तो सब गुडा का basic है बे नहीं ओके is it audible to you? Okay, so ई प्रॉपर्टी विषय में डिस्कशन करिजे ठीक रे देखा एठी लिखिला मैंगानीज रो गोटे ऑक्साइड लिखिछि मैंगानीज Mn2O7 ओके ई ऑक्साइड ता बहुत इंपोर्टेंट तुमको ऑलरेडी तुम कहि सारिछि JEE +7 oxidation state रे अछि 3D0 रे अछि still it is showing purple color in solid state ठीक रे देखा in solid state a solid state रे से को कलर देखिछि देखा purple color okay but it is covalent green oil जो लिक्विड स्टेट में देखा जाए से कोvalent देखा जाए देखा ग्रीन ऑयल भली देखा जाए हबा रीजन ठीक है देखिबा एथरे ट्रेंड्स कोन प्रॉपर्टीज कोन कैरेक्टर कोन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स कोन हो जाए डिक्रीजेस तमे धर एमिति नेचा MnO2 एमिति जाई कोठी पहुंचीचा Mn2O7 तो एठो पर्यंत जीवा भितरे ऑक्सीजन रा संख्या बढ़िछि ऑक्साइड रा अमाउंट बढ़िछि तो सेथरे से पहला आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाइछि को कैरेक्टर बढ़ि जाइथिबो ना कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़िथिबो हला केत्ता बळे बढ़िछि एटा होछि तार ट्रेंड oxidation number of metal in metal oxide increases जदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़िबो ठीक रे सुनो यार ऑक्सीडेशन स्टेट अछि +2 यार अछि +4 यार अछि +7 अगेन आई एम सेइंग MnO रे +2 एथे ए ट्रेंड ता बहुत जरूरी MnO2 रे +4 Mn2O7 रे देखा हो जाइछि +7 ऑक्सीडेशन नंबर ता कोन होछि इंक्रीज होछि इंक्रीजेस इंक्रीज हले ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ि गले कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ुछि आयनिक कैरेक्टर कोन हो जाइछि डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़िले
ionic character decrease होइछि covalent character increase होइछि ओके मनैला देखा आ कौन पाइला एठी लेखिला सेटा oxidation number is inversely proportional to कौन अछि ionic character जब भी ionic character अच्छा ionic compound ର melting point अधिक ଥାଏ ଯଦି ionic character कमिला melting point कौन हेतिबो decrease करिवो ionic character कमिले melting point कौन हेतिबो decrease करिवो ताले देखा एठी दुईटा कंपाउंड लेखा हेछि ठीक है अगेन चेक करा गोटे कंपाउंड लेखिली CrO गोटे लेखिली CrO3 तो एथिरे ऑक्सीडेशन स्टेट अछि +2 एथिरे अछि +6 आमे जानिछे यार ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक अछि ऑक्सीडेशन स्टेट माने यार आयनिक कैरेक्टर लो अछि कोवैलेंट कैरेक्टर हाई अछि कोवैलेंट कैरेक्टर हाई यार आयनिक कैरेक्टर लो ता मेल्टिंग पॉइंट लो हवा एठी आयनिक कैरेक्टर अधिक अछि सो एठी मेल्टिंग पॉइंट रहिबो हाई क्लियर कोन कहली जानि हला ताले तमे एबे निजे बाछि परिबो NNO NN2O7 ভিতরে কাহার মেল্টিং পয়েন্ট अधिक এটি আয়নিক ক্যারেক্টার কম কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার अधिक তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট লো এটি মেল্টিং পয়েন্ট হাই সিম্পল হবা আর গোটে জিনিস কহিলা এসিডিক ক্যারেক্টার বিষয়ে কে hints देखा oxidation number of metal in metal oxide increase hলে acidic character of oxide increases एठी ही एग्जांपल ता लिखा है इसी टिके चेक करा MnO अछि Mn2O7 अछि एथिरे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अछि एठी +7 अछि मझरे तमे एटा कि रखिबार +4 ताको किछ सुविधा नाही से कहछि ए तीनटा भितर कहार एसिडिक कैरेक्टर अधिक रहइबो ना जहार अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट सी ही रहइबो मोर एसिडिक ताले एटा हो जो मोस्ट एसिडिक एटा हो जो मोर एसिडिक एटा हो जो लेस एसिडिक एसिडिक रो उल्टा ता बेसिक दिबो हबा ताले मन रहइबो ठीक जिंस आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर एटा जेंति बॉक्स है जे सेमे हम लिख दे परिबा ऑक्सीडेशन नंबर इज कोन हो जइतबो कहा ना एसिडिक नेचर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल होइतबो क्लियर ताले देखा कोन कहला सेति पई Mn2O7 को देखा Mn2O7 लागिले ठीक है वाटर सहित लागिले गोटे HMnO3 रही या को कहते मैंगानिक एसिड कौन कहते मैंगानिक एसिड दिस इज कॉल्ड मैंगानिक एसिड समथिंग CrO3 is treated with water to give H2CrO4 this is your chromic acid this is your chromic acid हवा क्लियर ठीक अछि एटा ए स्लाइड ता बहुत इंपोर्टेंट एबे जो डिस्कशन करथिले को ऑक्साइड हबो एसिडिक को ऑक्साइड हबो बेसिक तार उते ट्रेंड देखैछि ठीक अछि याके टिके ठीक रे देखिबो ऑक्साइड्स ऑफ vanadium रा देखा V2O3 V2O4 V2O5 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ऑक्सीडेशन स्टेट केते आछि +3 एठी +4 +5 ओके highest oxidation state is in V2O5 so जे lowest oxidation थिबा से हला more basic हला ये कौन होथिबा less basic ये है वाला amphoteric देखो तम तो सर्कल के लेटा more acidic हबो एसिडिक बोली कौन बेसिक साइड रो हम जाउचे से जो पर्यंत पहुंचला जदि एसिड हेई पाला ठीक अछि ता माने कहिया कथा ये जदि वाटर सहित रिएक्शन करिके गोटे एसिड दबो ताहले ताको कहबो एसिडिक यदि वाटर सहित रिएक्शन करिके से न्यूट्रल रहला ताल ताको कोन कहबो एम्फोटेरिक यदि बेसिक साइड रे रहला ओएच देला ताले जानिबो बेसिक इया हे कथा एबे तुमको एटा सिखे चली देखो
chromium case टा देखा chromium रे CrO3 रे एबे जो देइथिला 2 वाटर हला गला पर से तम खाली वाटर देइथिला गोटे वाटर तो ये हो गला H2CrO4 chromic acid हो गला तो इटा होला एसिडिक नेचर इटा रे CrO3 टा तमरा हो गला amphoteric CrO टा होची बेसिक हबा तो कोठी को पर्यंत जीव सेटा एक्सपेरिमेंटल जिंस वाटर सहित मिसेला परे ही कहि परिया सेति कांदा हम कहले तमे जस्ट फ्रेंड रे देखि दबा देखा एइथरे तंगु ए तीनटा ऑप्शन देथिवा एइथरे ए तीनटा देथिवा तो से हिसाब रे केवल ऑक्सीडेशन स्टेट जहारा फास्ट थिवा ताकु एसिडिक साइड को रखि दबा चलला कथा एति होला कथा जब तमको बेसिक लेस बेसिक एम्फोटेरिक देछि जरा हाईएस्ट थिबो ताको एम्फोटेरिक साइड रे रखियो जरा लोएस्ट थिबो ताको मोर बेसिक रे रखियो और मध्य मध्य थिबो ताको लेस बेसिक रे रखियो एटा काम मुंडर आईक्यू कथा हबा क्लियर देखो बर्तमान फास्ट कंपाउंड एटा कि तमारा कोन अछि पोटेशियम डाइक्रोमेट ता विषय टिके पढियते जाउछे बार बार कहिछि पोटेशियम डाइक्रोमेट के CR2 में CR ऑक्सीडेशन +6 ताले ये को कॉन्फ़िगरेशन होथिबा 3D0 ये हब्बा कथा कलरलेस बट होची ऑरेंज कलर देखा जाउछि तुमको ऑरेंज कलर का क्रिस्टल्स ओगडा का हला तो ऑरेंज कलर होची दिस इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा let us move ahead there are preparation एथरे हम पढिया यार preparation properties आपण तर oxidizing action हबा preparation properties structure uses इचे जिंस विषय डिस्कशन करिया let us move ahead preparation from chromite ore को या तो तैयारी करेंगे chromite ore ता होची FeOCr2O3 हबा यदि निते को मिसई दबा सेटा कह जाउची FeCr2O4 लिखा हबा this is your chromite ore reacts with NaCO3 in presence of sufficient oxygen excess oxygen to give yellow solution important हला इस स्टेट गुडा कर कलर जानिबा ठीक अछि एथि एबे थारो कहूची ए जो K2CR2O7 में दीटा ही कलर आसीबो again I am repeatedly saying दीटा कलर आसीबो ओटा आसीबो CrO4-2 क्रोमेट जो याकु कांती क्रोमेट आयन कोन कहले क्रोमेट आयन हबा आ गोटा हला डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 ओके क्रोमेट आयन रो कलर सब बेले येलो कलर होइथिबो को कलर हबो येलो ठीक अछि आ दिस विल बी योर ऑरेंज कलर जो ठीक है Cr2O7 लिखिछे एथि को कलर अछि ऑरेंज एथि CrO4-2 देखुछे को कलर अछि येलो हबा बटन लिखा प्री रिएक्शन एथरे मोर किछि क्रेडिबिलिटी नाही दिस इज द रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर सिंपल कथा ठीक अछि केवल मु एति की कह करबी एई जिंसटार इंपोर्टेंस ता कह दी करबी the first step you have to remember that is chromite or FeCr2O4 reacts with sodium carbonate in excess oxygen to give sodium chromate yellow solution this is your solid precipitate this is your gas if you have filtered it then you will get this one in the filtrate okay this will be separated. Okay, now the yellow solution is treated with acid 2HCl. You can take 2HCl. Okay, it will give you 2NaCl. Okay, simple. But the chromate ion CrO4-2- is converted to Cr2O7. But this is potassium and we require potassium. It is sodium chromate. This is sodium dichromate. Okay, this is sodium chromate. This is sodium dichromate. Remember, in first step we are going from
chromate to chromate. In the first step, you are going from chromate to chromate. Then in the second step, from chromate to dichromate. This is the sequence. See, chromate to dichromate. Am I clear? Okay. ଦେଖ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ଟା ବି ତମକୁ ସହଜ କହିଦେଉଛି କେମିତି ନା ଦେଖାଯାଉଛି ଦିଟା Na2CrO4 ନେଇଛ ଏଥିରେ ଦିଟା HCl ଦେଇଛ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ ହଉଛି 8ଟା ଏଠି କେତେଟା H ଅଛି ଦିଟା ତ ଦିଟା H ଗୋଟେ O ୱାଟର ହେଇକି ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ ରହିଲା 7ଟା 7ଟା ଲେଖିବ ମାନେ Cr କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ ଦିଟା Cr2O7 ଲେଖିଲ ତ ୟା ଉପରେ -2 ଥାଏ ମାନେ କେତେ ଲେଖିଦବ Na2 ତ ଏଠି ଥିଲା 4ଟା Na ଯୋଉ ଦିଟା Na ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ବଳିଲା କେତେଟା Na ଦିଟା Na ଦିଟା Cl ସହିତ ମିଶିକି 2 NaCl ହେଇଯାଏ ଠିକ ଅଛି this is the reaction okay clear देखो प्रिपरेशन अगेन कहले ଆମର ଦରକାର potassium chromate not sodium chromate the sodium chromate reacts with 2KCl sodium तीनटा स्टेप थिला देखो तीनटा स्टेप थिला again I am repeatedly saying first step is from chromate to chromate second step is from sodium chromate to sodium dichromate third step is from sodium dichromate to potassium dichromate. For replacing sodium, you have to use KCl. Then 2K will take the place of 2 Na and you will get 2 NaCl. This is orange solution. If you concentrate it, and the NaCl will be removed as precipitate or actually, see. What happens on concentration this orange solution this is orange solution this orange solution will give you orange crystals however the remaining NaCl will dissolve in solution and will be removed okay प्रथम के क्रिस्टल लाइव होची K2Cr2O7 होगा बहुत लोग भावती NaCl क्रिस्टल जो प्रथम के क्रिस्टल होची K2Cr2O7 okay this is the preparation but I will say know this as effect of pH okay better to remember this as effect of pH preparation सरीगला ए पर्यंत रे तमे preparation कर देलो ठीक अछि एइथिरे गोटे स्टेप थिला 2 रु 3 नंबर स्टेप को मन बका 2 नंबर स्टेप रे Na2CrO4 is converted to Na2Cr2O7 next step रे सेटा ही लिखा होइछि हमने CrO4 -2 is converted to Cr2O7 -2 किंतु एथरे कोन देइथिला टिके माने पका दीटा HCl देइथिला you have given 2H plus तमन एथि 2HCl देले हेछि तमन you have treated with 1HCl you have treated this one with 1HCl okay so we can say chromate is converted to dichromate when the medium becomes acidic. When the medium becomes acidic, clear? So this is the effect of pH. See, this is chromate, this is dichromate. When I am giving chromate, this is dichromate. When I am giving acid, the chromate is converted to dichromate. The color, you can see the color is yellow. This color is orange. You can see the vessels. This is yellow color, this is orange color. Okay. So, when
chromate ion or chromate is treated with acid, it is converted to dichromate. The color changes from yellow to orange. Now, this dichromate is treated with base. See, weak acid ଦେଇଛେ, alkaline ଦେଇଛେ. acid ଦେଲେ chromate dichromate, alkaline ଦେଲେ dichromate chromate. Again, ଯଦି base ଦଉଛେ, base value orange will be converted to yellow. This is called effect of pH. अब acid माने pH कोठु कोठु चलथिबो 1 to 7, base माने pH कोठु कोठु थिबो 8 to 14 बा 7 to 14 मीटर ला तो pH चेंज रे एथरे कलर चेंजेस होची. एथि गोटे क्वेश्चन पचारे what will be the equilibrium pH तामाने जो pH रे automatically chromate dichromate तो dichromate chromate तो तुमको किसी acid किंवा base ऐड करिया तो पड़ेगा नहीं. that is pH 4.8. pH 4.8 रे तो रखी की छाड़ दबा ताले कौन हो जाए 4 to 5 ताने 4 to 5 भीतर pH जो रखी की देखिएगा जनरली कौन है से converted हुआ automatically yellow का orange हुआ orange का yellow हुआ. okay. property এটা হলা oxidizing nature, বহুত important property. The nature of K2CR2O7 solution is it is acting as a strong oxidizing agent, means it will oxidize occurs. हवा organic chemistry में सोडियम डाइक्रोमेट नोचे inorganic volumetric titration में K2CR2O7 नोचे का से रिएक्शन करूची HCl4 ये सब संख्या ठीक है भाई का से रिएक्शन करूची ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ताकि की ऑक्सीडेशन ये करी करे. एसिडिक मीडियम रे ए रिएक्शन हुए K2Cr2O7. okay, K2Cr2O7 if you are treating with H2SO4 carefully take a check करो chemical reaction करंती K2SO4 it will give you this is sulfate, so it you will get salts of sulfate K2SO4. okay, again chromium will give you chromium sulfate Cr2SO4 whole 3. okay, now these are the two salts formed. Two metals are there, K and Cr. These are two salts. Check the for balancing. Check the sulfate ion. These are three sulfate. First balance metal. 2K is here. 2K is here. Then 2Cr is here. 2Cr is here. Then balance sulfate. 3 sulfate is here. Here is 1. Total 4 sulfate. So write 4H2SO4. okay. Now here the remaining part is your 7 oxygen. You have 4H2. So how much H2 is there? 4H2. 4H2 will be removed as 4H2O. चारिटा H जीवा चारिटा H2O ହେଇକି clear. ताहले बटन देखा एठू चारिटा ऑक्सीजन माइनस हो गला ताहले बॉडी थिबो केतेटा ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन. these are called 3 nascent oxygen. in management responsible for oxidation for oxidizing action. जति ए सेम रिएक्शन टाको तमे आयनिक फॉर्म में लिखिछ. दिस इज द इक्वेशन. एठु के हटै दियो रहिला के देखा Cr2O7 -2 Cr2O7 -2 एठी Cr पोस्टेड टू दैछि +3 एठी पोस्टेड रखिला +6 काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हला ताने एपटे कोठी दैछि Cr+3. बैलेंसिंग केने करंती देखि दबो एठी दुईटा प्रोग्राम अछि एठी 2Cr लिखि देला ठीक अछि. बटन लिखा एठी इलेक्ट्रॉन केते थिला
ना यार हला +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एठी +3 हबा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 अच्छी एति जाने से बर्तन लेखा ऑक्सीजन को बैलेंस करो ऑक्सीजन केतेटा अछि 7टा तो एपटे केतेटा ऑक्सीजन हो जिवो 7H2O जेतिकिटा ऑक्सीजन थिबो राइट साइड रे सेतिकिटा वाटर करके रिमूव कर दो ठीक अछि 7टा ऑक्सीजन अछि 7 एठी केतेटा H हे गला 14 जेहेतु एसिडिक मीडियम नै जे एपटे केतेटा H+ दे दो 14H+ हबा वर्तमान चार्ज बैलेंस कर दबो चार्ज बैलेंस करिवो ऑटोमेटिकली तमरा एठी 6 इलेक्ट्रॉन आसी दियो देखो लेफ्ट साइड रे 14 टा प्लस चार्ज 14 प्लस 2 माइनस ताले केते चार्ज अछि +12 এই পটে কেতেটা আছে দেখো 2 into 3 কেতে আছে +6 মোর লেফট এলএচএস রে আছে +12 রাইট সাইড রে আছে +6 তাহলে কেতে ঘর জাম্প করছি হাউ মেনি ইলেকট্রনস ইট উইল রিকোয়ার না +6 ইলেকট্রনস ये सब সেইটাকে আমি লিখে কিছু দেখা 6 ইলেকট্রন পারি ক্লিয়ার जीए एमिति चार्ज काउंट न करि परिबो एमिति बैलेंस कर देला परे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर दो हैला तो एठी क्रोमियम ता +6 रु ओठी की जाईची +3 ताने केतेटा इलेक्ट्रॉन दरकार हेतिबो 3 हैला एटा केतेटा क्रोमियम पई अछि गोटे क्रोमियम पई କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେତେଟା କ୍ରୋମିୟମ ଅଛି ଦୁଇଟା କ୍ରୋମିୟମ ଯିବା ପାଇଁ +3 କୁ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର ହବ ନା 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ तो जेतिक इलेक्ट्रॉन हला एठी लिखि 6 इलेक्ट्रॉन ओके तेंते लेखंती जानि होला गट्स एठी जोगु नेशनल ऑक्सीजन हो बा एपट नीचे रिडक्शन होची गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेखा Cr2O7 is gaining electron gain of electron means itself it is reduced it undergoes reduction if it is undergoing reduction it will act as oxidizing agent हबा जेहेतु देखो रिडक्शन द पोटेंशियल भी केते देछि 1.33 पॉजिटिव रे अछि ताने ये डेफिनेटली रिडक्शन हे परिबो इजीली रिडक्शन हे परिबो पॉजिटिव रे अछि एंटर से काउंट हो जाए नीचे रिडक्शन होछि अन्य को ऑक्सीडेशन करछि सो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हबा देखो ब्रीथ एनालाइजर ठीक है breath analyzer kon yar application this is the application of oxidizing agent we know if you have alcohol CH3CH2OH on oxidation by K2Cr2O7 it will be oxidized to your aldehyde or ketone CH3 is acetic acid or aldehyde we can say it is oxidized to acetaldehyde. So if someone is drowned, you are giving an Cr in +6 orange solution, then what will happen? Means on oxidation, on treatment with ethanol, it will give you the oxidation product that is your aldehyde and the chromium +6 will be converted to chromium +3. The color, orange color will change to chromium +3 green solution. Another important aspect I am saying, this is your orange color, this is your orange color, this is your green color. Remember, the green color is due to this one, Cr2SO4 this is your green compound, this is your orange compound, this is your orange compound, this is your green compound. So on oxidizing action the color changes from orange to green. आउ टिके पूर्व इफेक्ट ऑफ पीएच कहथिली तो सेथिरे बहुत बिला कंफ्यूजन हो जानती मारी देबे क्रोमियम 3+ रा कलर होतिबा येलो लिख देबे तमे येलो टू ऑरेंज पढैतिली इफेक्ट ऑफ पीएच रे भूल करिवनी Cr3+ is your green in color okay
Cr2O7 2 minus is orange. Oxidizing agent orange is converted to green. Okay, these are the oxidizing action. देखो रिएक्शन भारी इजी अछि तब ठीक रे जब देखिबा एबे तम रिएक्शन लिखितला Cr2O7 minus 2 reacts with 14H plus ए लाइन ता पूरा बेद कंपाउंड बेद रगा रहि जिवो ला फर्स्ट लाइन सबले एटा रहिबो ठीक अछि 2Cr3 plus okay it will give you 7 water here also clear. If you are taking iodide, then we will have I minus. I minus will be converted to I2. So to here one electron is removed due to oxidation. So we need to cancel this 6 electron. We need 6 electrons here. So we have to take 6I minus, so it will give you 3I2. Just add these two equations, you will get your final equation. The final equation will be like this: Cr2O7 minus 2 plus 6I minus 6I minus 14H plus gives you 2Cr3 plus 3I2 and 7 water. Okay, so this is the final equation. Okay, I have written the second steps. This is the second step. This is the first step. First step is fixed for K2CO7. You just put the second step, cancel the 6 electron, get the final equation. It is now your homework. I have written the first step. This is the first step. This is the second step. You just need to replace this second step with this one. Okay, the iodide nature product which is iodine, the sulfides S2 minus nature product is sulfur, and remember sulfur color is black. Sulfur color is black. Okay, tin Sn, if you are taking Sn2 plus stannous, it will be converted to stannic Sn4 plus. If you are taking ferrous, it will be converted to ferric Fe2 plus to Fe3 plus. Okay, just change the second step reaction and get the overall reaction. Is it possible for you? Okay, I think today the number of students is very less. I do not know why, whether it is the rainy season or some other reasons, I do not know. But we will try to do our jobs. Students hopefully will do their works. Okay. This is the titration showing conversion of color. This is the titration experimental verification. This is not needed for NEET JEE or your council theory exam. Okay. This is important. Another last oxide we are discussing of chromium. This is important. CrO5, chromium pentoxide. Here, in this case, if you are going to calculate the oxidation step, as usual method, then you will take X for chromium and 5 into minus 2 for oxygen. Whole compound is neutral, so X will come as plus 10. But chromium has this configuration: chromium 24, 3d5, 4s1. It only can remove 6 electrons.
So it will give maximum oxidation state plus 6. But you are saying this may have oxidation state plus 10, which is completely wrong. Remember, don't go like this for CrO5 because the oxidation state is crossing the limit. That is, you can have a maximum plus 6 oxidation state, but you are saying in normal calculation it shows plus 10 oxidation state. This is not possible at all. So to know the oxidation state, you must know the structure. But without knowing the structure, you can see the preparation here. That is, it is prepared from dichromate Cr2O7 in acidic medium in presence of H2O2. In presence of H2O2, so hydrogen peroxide, it gives chromium peroxide. Okay, so why it is called peroxide? Now, if you see the structure, you will know this one. Okay, the structure is like this. One chromium is at the center, this is center. Okay, another oxide is forming double bond. Oh, rest are 4 oxygens. Of chromium already formed 2 bonds. Another 6 bond, it will another total number of bonds formed by chromium is 6 total bonds. Okay, chromium forms 6 bonds because it has a 3d5 4s1 configuration. 6 electrons are there. It can have a plus 6 oxidation state or 6 bonds. Okay, out of 6, 2 bonds are already gone. So it will form 4 bonds with other 4 oxygen. So this is minimum bonding for chromium. But what about this oxygen? Oxygen forms 2 bonds. It has 1 bond. So another bond will be here. Another bond will be here. We know if oxygen has single bond, this is called your peroxide bond or peroxo bond. This is called peroxo bond. Okay, so see, this is oxide bond. Cr double bond O, this is oxide bond. But these are peroxy or peroxo bond. Okay, so the question will be how many peroxo bonds are there? And the peroxo bond ketara ache 90. How many oxide bonds are there? 1. What is the oxidation state of chromium? Now for oxide, oxygen has -2 oxidation state. See how the oxidation state is assigned. This is -2. To neutralize this one, chromium will have a +2 oxidation state. This is peroxide, means -1. So it will have again -1 here. It is -1, so it will have -1 again here. This is -1, this will be +1. So this will be +1. This is -1, so it will be +1. See how many plus charges chromium is having? 2, 3, 4, 5, 6. So oxidation state of chromium will be +6. You can see +6. Okay, from structure you can calculate the oxidation state as it has a peroxo bonds. In case of peroxo bonds, you must go for structure for oxidation state. Clear? And most importantly, this looks like a butterfly. So the structure is called butterfly structure. This structure CrO5 has butterfly structure. Okay. What is the structure of the chromate ion? This is chromate ion CrO4 -2. CrO4 -2. Okay, so this is your chromate ion. We know if this is the scenario, then hybridization must be sp3. For tetrahedral geometry, this is nothing but your tetrahedral geometry. Okay,
We know for tetrahedral sp3 will be the hybridization, but here this is transition metal, this is transition metal. So you can say it is having hybridization instead of sp3, it will be sd3, it will be sd3, you can say. Okay, this is dichromacy. Again, in this case, what happens? Now this is the scenario. 2 chromic acid, 2 chromic acid. Chromic acid is this one. Okay, if you are taking 2 chromic acid, 2 chromic acid, okay, then what happens? Now here 2 OH groups are nearer to each other, so H2O is eliminated. If H2O is eliminated, H2O is eliminated, then what is the remaining thing? C, Cr, here is double bond O, here is double bond O. Here you can see OH means I can write as anion O minus. At this chromium center also C double bond O, C double bond O, 1 O minus is here. Okay, but what about this oxygen? This will be the bridging oxygen. This will be the bridging oxygen. This is the structure. So there are 2 tetrahedral centers. One is here, one is here. The question will be asked, how many oxygen bridge is there? 1 oxygen bridge, this one, the bridging oxygen. Okay, how many? These are the terminal oxygens. These are the terminal oxygens. Okay, so this is the structure. 2 tetrahedral structures will be in dichromethane. Clear about structures, properties, and preparation. Used in leather industry for leather tanning process. Okay, to prepare azo compounds. Azo compounds means N double bond N compounds. These are N double bond N. Okay, see here N double bond N is there. This is the bond, this is the bond. These are azo compounds. For preparing azo compounds, these are used as reagents. Okay, your next compound is KMnO4. Its name is potassium permanganate. Okay. Okay, potassium permanganate. The oxidation state of potassium permanganate, this is plus, this is minus 8. So it is coming as plus 7, isn't it? Okay, if you do not know this one, do like this. As we have mentioned, this is 8 plus, potassium has plus on oxidation state. This is X. This is 4 into oxide minus 2 is equal to 0. So X will come as plus 7. So oxidation state of manganese is plus 7. Again, I am saying this is manganese plus 7 means this is 3D0. It must be colorless, but it is purple in color. It is purple in color. This is the color. This is what this is. Whatever may be. Dilute condition name to the color to it, concentrated the color is purple. Okay. The color is due to, again, not due to DD transition. This is due to charge transfer spectra. This is due to charge transfer spectra. We are going to see the preparation properties, structure, chemical properties uses. This will finish your D block. Okay, ready? So let us go to preparation. Preparation is from pyrolusite. Pyrolusite
is the ore of manganese. MnO2 is the ore of manganese pyrolusite. Okay, so from pyrolusite, this is the black solid. Remember, color in entrances, color change or lengthy questions are coming with colors. Okay, MnO2 is black solid. You are giving KOH in presence of oxygen. It gives, remember, there are two compounds. Don't confuse among them. KMnO4, K2MnO4. This is potassium permanganate. Okay, here K is in there. In K2MnO4, this is potassium manganate. Okay, potassium manganate. Remember, in potassium permanganate, manganese is in +7 oxidation state. It is 3D0. But in potassium manganate, it is +6 oxidation state. It is 3D1 configuration. We are not same bro. We are not same bro. We are not, they are not same. But ମନରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆସିଯାଏ ସମାନ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସମାନ ହେଇଯିବ. Not like that. Okay, see. In pyrolusite, data step, second to tinta step, like data step ଅଛି. Pyrolusite is heated with base KOH in presence of oxygen to give potassium manganate. So first step is conversion of pyrolusite to potassium permanganate. There, it is dark green. It is your dark green substance, potassium manganate. But this is purple. This is dark green. Okay, this is black. So black is converted to dark green first. Then this is C. This is MnO4 minus 2. This is MnO4 minus 2. This is MnO4 minus. In permanganate is MnO4 minus. Manganate is MnO4 minus 2. Here it is already written also. Then from first step, manganate ion MnO4 minus 2 is treated with acid to give in presence of କାହାକୁ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେପ ରେ ଦେଇପାରିବେ ଦେଖ KNO3 KClO3 ଏଇ ଦିଟା ଏଜେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଦିଆ ହୁଏ ହେଲା ଦେଲେ ଏମାନେ କୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ପଚାରୁଛି they give disproportionation reaction କାହାକୁ କହନ୍ତି if ଦେଖ manganese ର oxidation state ଅଛି +6 ଟା MnO2 କୁ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ ହେଇଛି +4 କେତେ ହେଇଛି +4 MnO4 minus କୁ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ ହେଇଛି +7 ତା ମାନେ +6 single oxidation state is oxidized to +7 is reduced to +4 তাহলে both oxidation भी ହେଇছে reduction ହେଇଛି ଗୋଟିଏ oxidation state ଦିଟା oxidation state କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ compound ରୁ ଯଦି ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବେ disproportionation reaction if single oxidation state of a single species
is both oxidized and reduced to give two other oxidation states, then the reaction is called disproportionation reaction. Due to disproportionation reaction of the manganate, this is manganate in acidic medium in presence of KNO3 or KClO3, we get permanganate. We get permanganate. This is dark purple solution. Okay, this is the preparation. So you can see another method. This is a commercial method. Okay, in commercial method, what happens? First, MnO2 pyridine site is fused with the same reaction, previous one. This is the reaction which is written here again. The electrolysis result କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ପ୍ରଥମ step ଟା fix ରହିବ. So KOH ସହିତ reaction କରିବ in presence of KNO3 or air to give this is your manganate. Okay, now the manganate is electrolyte. Electrolysis होची को medium रे alkaline means KOH ଦେଇକି ଯଦି KOH ଦେଇକି କରିବ ତାହେଲେ it is converted to କଣ ହେଇଯାଇଥିବ permanganate. First method ଥିଲା reagent use କରିକି ଏଇଥିରେ होची electrolysis. Second step ଟା କଣ होची electrolysis ହେଲା ତ ସେ ବି होची permanganate. Okay, last laboratory method ଅଛି. Laboratory method का है oxidation of manganese oxide by MnO2 to MnO4 minus by H2OH. Marshall से सिद्ध कहते H2SO8 या तो ये भी कहते for sulfuric acid. ये नाम कौन हो गए for sulfuric acid. होगा for sulfuric acid बोले से कोई भी कन्वर्ट होगा mangan for manganate. होगा हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट एक दो नंबर में फर्क है एक दो ठीक है बाय साइड पे इलेक्ट्रोलिसिस एक खाता है नंबर है फिर भी एंट्रेंस टाइम मस्ट बी लव. ओके देखो पहले प्रिपरेशन में मोर कुछ विशेष ये रोल नहीं तो मैं से थोड़े जहां काम को लिखा है जी से केन काम पढ़ियार है जहां रोल आसीबा हमरा कोथरे प्रॉपर्टी रे कोठी बुझिया दिन सारे एटा किछटा दिन से मन रखते पड़िबा से हमरा विशेष रोल रहबा. ओके देखो एटा कहबी इंटेंस कलर यार कलर होची पर्पल इंटेंस कलर देखो manganate and को कलर देछि ग्रीन ठीक है ब्लू से ये छै बट ग्रीन है और एटा छै पर्पल ला देखो तो आयन अलग अलग ठीक है ये तब ठीक रे देखिबा हां हमें पहले आउटपुट करू MnO4 minus. This is for manganate. This is for manganate. It has +7 oxidation state 3D0. ताले एटा है जैसे तुम्हारा 3D0 माने N is equal to 0. So mu is equal to 0. So it is diamagnetic. Diamagnetic. ये diamagnetic है जैसे ना तुम्हारा for manganate. अब किंतु एटा जो देखो manganate manganate का कौन हो जाएगी ना MnO4 minus 2 it is +6 oxidation state so it has Mn +6 Mn +6 माने it has 3d1 N is equal to 1 mu is equal to √3bm और का में बाउंड्री 1.732 bm. So 1.732 bm माने ये है जो paramagnetic और 1 unpaired electron लिख देते 1 unpaired electron फिर 0 unpaired electron no unpaired electron so it is diamagnetic. और MnO2 का ब्लैक
तो एटा केमिति मिलिछि देखो गोटे प्रॉपर्टी पाइले जे MnO4 डार्क पर्पल कलर का जो 513 केल्विन में हीट करता it changes to from diamagnetic to paramagnetic, from diamagnetic to paramagnetic. Okay. Structure देखो MnO4 minus H6 Mn तीनटा डबल बॉन्ड गोटे O minus रही. This is the structure. This is again tetrahedral geometry. This is tetrahedral geometry. Okay. Permanganate हो manganate हो. This is permanganate. This is permanganate. Manganate हेले एमती लिखिबो Mn double bond O double bond O O minus O minus. This is manganate. Okay. Both are कौन अछंती tetrahedral. Hybridization कौन आसीबो sp3 sp3 बदले कौन लिखदबो sp3 simple oxidizing properties. देखो K2CH2O7 एटा सिंपल थिला एसिडिक मीडियम रे जेतला हे जेतला एथरे किंतु तीनटा मीडियम रे हे परिबा एसिडिक रे हे परिबा न्यूट्रल बा फ्रेंकली अल्कलाइन अल्प अल्कलाइन हे थिबा आ गोटे स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम रे ओके. So मन रखिबो सेठी जाउथला Cr6 plus is converted to Cr3 plus. Here manganese plus 7 is converted to Mn2 plus. Converted to कौन हो जाएगा Mn2 plus. ठीक है सर. कल देखा रिएक्शन के लिए करिचे तुमको सिखेइली Mn first step. This is the first step. MnO4 minus is converted to Mn plus 2. So first balance the metal गोटे Mn अछि गोटे Mn अछि ठीक अछि केतेटा ऑक्सीजन अछि चारिटा एतिकटा ऑक्सीजन थिबा एपटे सेटिकी वाटर रिलीज कर दबा 4H2. Now the number of hydrogen becomes 8. So write 8H plus on the LHS side. First year balancing सिखिथिबा रिडक्शन को दिन सिखिथबे कि कहजली किछ असुविधा नहीं. बर्तन इलेक्ट्रॉन लबा इलेक्ट्रॉन देखिबार बाट होची एथे देखिबा सिंपल हला गोटे मैंगनीज अछि तो किछ मल्टीप्लाई करिवार नहीं केवल चेक करियो +7 ता +2 +7 oxidation state is converted to +2 oxidation state. So how much electron is needed? 5 electron. So write 5 electrons. Now you know this is the first step. First step already we have written the second step for K2CH2O7. Same reaction can happen here. Okay. So if I am taking I minus, then I will get I2. So balance I. So 2I will be there. Minus 2 electron will be here. Okay. This is the second step. This is first step. This is second step. Okay. This is second step. For complete reaction, what I will do? Now, I will multiply this equation to cancel electron. This is 5 electron, this is 2 electron. What I will do? I will multiply 5 here, I will multiply 2 here. Multiply the first step number in the second step number in first. Exchange number. यार 5 ता एटिक नै आसला यार 2 ता एटिक नै दिया एबे देखो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जिवे खाली एटा मिसिक इलेक्ट्रॉन आसीबो अरे आसीबो एटिक okay. So see, this is the reaction. Just I told you this reaction I minus होता यानी Fe2 plus होता तो करिए
MnO4 minus 8H plus 5 electron gives us Mn2 plus 4H2O. Okay, we'll take Fe2 plus. Fe2 plus is oxidized to Fe3 plus. 1 Fe atom is there already balanced. So I just need to remove 1 electron. To cancel 5 electron, I will multiply this one with 5 and then add. See, what will be the equation? MnO4 minus plus 8H plus 5 Fe2 plus gives me Mn2 plus 4H2O plus 5 Fe3 plus. This is the reaction. Check. Okay. See, the Fe2 plus is green in color. Fe3 plus is yellow in color. And the color, do not say that the color said here is due to Mn. This green color is due to Fe2 plus. This yellow color is due to Fe3 plus. MnO4 is purple in color, but it is during this reaction, it is predominated by green color. बेसी देखा जाए ग्रीन टा पर्पल टा तले लुचिकी रहीजिव ठीक है देखा ऑक्सलेट आयन एबे सेमती C2O4 C2O4 दिस इज ऑक्सलेट आयन ओके छटा रिएक्शन अछि कोन रिएक्शन कर दे सेकंड स्टेप रे I माइनस टा कोठी की कन्वर्ट हेतिबो I2 Fe2 plus टा कोठी कन्वर्ट हेतिबो Fe3 plus C2O4 oxalate ion એટલે કે છે oxalate ion is converted to 2CO2 okay তারপরে NO2 minus is converted to NO3 minus হবে SO3 2 minus is converted to SO4 2 minus এটা একটা রিঅ্যাকশন করতে পারিব আর গোটে C2H5OH ethanol is converted to acetaldehyde CH ঠিক আছে these are the 6 reactions you can try এটা সেকেন্ড স্টেপ রে কি হইছে দেখুন C2O4 টা C2O4 2 minus রে দুইটা ইলেকট্রন মাইনাস করিবি এই যে কোন 2CO2 সিম্পল ଏବେ ফার্স্ট স্টেপ টা জানিছ এমন না আছে তুমি সেটা केवल इलेक्ट्रॉन कैंसिल करिए NO2 माइनस এটা যাইছি NO3 माइनस सिंपल এথরে কোন কর দাও একটু গোটে ইলেকট্রন এটা আছে +3 অক্সিডেশন স্টেট এটা আছে +5 তো কতটা ইলেকট্রন লস হইতো দুইটা সিম্পল হবে করিয়ে permanganate titration is not carried out in presence of HCl. Why? Because in presence of HCl, due to permanganate, Cl minus is oxidized to Cl2 plus Cl2. Okay. Hence, we do not get the correct endpoint of the titration because titration endpoint केतବେଳେ ଜାଣିବ जदि तुम रिएक्शन में CO2 रहिला CO2 तो गैस टा उड़ी पळेला तुम केते अमाउंट CO2 बाहरला केबे जानि परिबो नाही केमिति जानंती ई पटु केते चेंज हिची एथिकी तो इटा जानि पई केते अमाउंट गैस ला कोन से अमाउंट सब्सटेंस डिपोजिट बार मिलिची तार अमाउंट चेक करंती इटा जदि मु जानि परबी 5 मोल देची ताले एथु कम करबी केते मोल दरकार होइतिबो endpoint जानि पई अमाउंट दरकार दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस हलो जेंते एटा उडी पळेला तमे तार endpoint केबे जानि परिबो नाही जेते चेष्टा करले एक्सेल सहित तमे जानि परिबो नाही अदर सहित जानि परिबो ठीक है न्यूट्रल मीडियम रे देखा एक पर्यंत एसिडिक मीडियम रे हमें एटा कंसीडर MnO4 minus 8H plus gives you with 5 electron gives you Mn2 plus
See, in a neutral medium, now the neutral medium reaction is this one, in which Mn here is +7, but on the RHS side it is not +7, it is +4. The compound here will be MnO, but here you have MnO2. Okay, so oxidation state change is 3. So you are adding 3 electrons here. Question will be asked. KMnO4 is strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent in acidic or neutral medium. Which one is correct? So तमे जानिछ greater the oxidation change केमति जानिबा एठु इलेक्ट्रॉन चेक कर दबा जो कि अधिक इलेक्ट्रॉन चेंज होईची सेटा होची स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एठी 3टा इलेक्ट्रॉन एठी 5टा इलेक्ट्रॉन ओके एटा रे ताहले कोन हेजिबो एटा हेजिबो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मीडियम रे एसिडिक मीडियम पिले एठी आखरी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कहूची एई सब सॉल्यूशन रे पचारिबो इक्विवेलेंट मास कोन पचारथिबो इक्विवेलेंट मास ओके सपोज लेट molecular mass is equal to m केते कहले m हमर पाठ कहे equivalent mass is equal to m by जेतले इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में थिबो तार चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ओके कोन कहले मन रहला चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ओके सिंपली तार मते कह जब मु एसिडिक मीडियम रे पचारिबो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 एटा हला KMnO4 केतेटा इलेक्ट्रॉन चेंज हिची 5 तमे सिंपली लिखिबो मॉलिक्यूलर मास बाय 5 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट केते हिची एटा +7 नु केते जाईची +2 तने चेंज केते हिची 5 तो एटा लिखि देबो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटी ताले मते कह करिवो ए न्यूट्रल मीडियम रे इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 माइनस KMnO4 will be molecular mass by केते हेजिबो एठी केते चेंज हेजी 3 हबा सेमिति देखो हमें K2Cr2O7 नबी परिचय K2Cr2O7 रे ये जाए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रो +3 किंतु दीटा क्रोमियम अछि बोली एपटे भी दीटा আছে तो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज केते আছে 6 ताले या कहीं यदि मो इक्विवेलेंट मास करिवि K2Cr2O7 then it will be coming as molecular mass by 6 तो 3 कर दबो तो 6 का तो 3 के 3 हेतो ना टोटल चेंज का टोटल केते चेंज हिची दीटा क्रोमियम टाइम दी थरे जाइथिबो ताले गोटे थरे रे 3 गला दी थरे केते जाइछि 6 so m by 6 तो जला इक्विवेलेंट मास भी केमते काढंते हबा इक्विवेलेंट मास केमते काढंते जाने हला ठीक है देखा इन न्यूट्रल मीडियम गोटे इंपोर्टेंट जिंस तुमको कहूछ ठीक है ध्यान दिया ताले सब दिया गोटे रिएक्शन आ टिके पूर्व आने करथिले ए रिएक्शन देखा एटा को मीडियम रे कहूची एसिडिक दिस इज एसिडिक मीडियम iodide this is iodide in acidic medium with KMnO4 is converted to iodine neutral iodine I2 okay किंतु ठीक रे मन रख एसिडिक मीडियम पर तो न्यूट्रल मीडियम कथा हिचे न्यूट्रल मीडियम रे एटा बहुत इंपोर्टेंट हिचे इन न्यूट्रल मीडियम potassium permanganate KMnO4 reacts with iodide. This is your iodide. It gives iodate. This is iodate, not iodide. Iodate ion. तमने IO3 minus हो जाएगी. अब इटा कितने केवल ध्यान दो. ठीक है? देखा से पहला
permanganate is converted to MnO2 pyrolusite by MnO2 by ZnO or zinc sulfate catalyst है। ये तो असुविधा नहीं। ଏବେ ଦେଖ alkaline medium କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ କଣ acidic ରେ 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲା acidic neutral or mild neutral or less basic mild base mild basic condition रे 3टा इलेक्ट्रन होता। ଏବେ ଦେଖ highly alkaline more basic zone रे pH रे गोटा इलेक्ट्रॉन चेंज होइछि से मैंगानेट को जाइछि किए जाइछि परमैंगानेट इज कन्वर्टेड टू मैंगानेट। ओके ताले केते इलेक्ट्रॉन यूज होइछि एथि तो एई केस रे अल्कालाइन मीडियम रे हम जदि कहबी इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन अल्कालाइन KOH medium is equal to asiba molecular mass by 1 content को taking electron change है यहाँ पर use KMnO4 use हला it is used as कौन decolorizing oil देखो पेट्रोल किंबा तमरा खाइबा तेल एवडा का सब कलर आके था एक्चुअली कलर पेट्रोल रा कलर कौन दम होता है कौन येलो बहुत ସେଥିରେ କିଛି impurities ରହି ଯାଏ କିଛି ପାର୍ଟିକଲ ରହି ଯାଏ ଯାହା ଯୋଗୁଁ କଲର ଆସେ ସେ ପାର୍ଟିକଲ କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ ନା KMnO4 ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଟାଣି ନେବ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଉଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମଇଳା ହେଇଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଲ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚକଚକ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା କେବଳ ପସିବଲ तमें जब डीकलराइज करूछ तमें सेथुरु इम्प्यूरिटीज हटेया पाई KMnO4 इवन KMnO4 को हम कहते लाल दवाई कौन कहते लाल दवाई ला मन रखियो काहे यार कलर पर्पल रेडी साइड को अछि ला माने नाले वाला देखा जाउछ आगर ये बहुत सारा डिग्री देखो गाय तरफ फाटुआर करे दिया होतला पानी रो प्यूरिफिकेशन वर्ष में पानी गोलिया हो गले KMnO4 ऊपर पके देंगे से तळे बसी जीव माटी कादो गुडा ठीक है सी एथरे संतु देखो कलर कोन अछि डीकलराइज कला पर केते पूरा धड़ा धड़ा येलो माने ऑयल कलर एक्चुअली जेते आसीबो सेते आसीबो होला एगुड़ाक किसी इम्पोर्टेंट कंपाउंड ये तमरे वर्तमान ପାଇଁ इमीडिएट जरूरी ना ओके भाबुची होपफुली आज एतिकी थाउ आ तो बेसी पिला नहती जो माने अच्छा तम माने को बहुत बहुत धन्यवाद एते समय पेशेंस फुली रहिया देखो so our D block element is finished here in next class we will go for F block elements okay केवल टिके एटाको स्क्रीनशॉट मारथिबो एथिरे दिटा सब क्वेश्चन प्राय टाइम पचारिछि व्हाट इज ग्रीन विट्रल इज योर कोन FeSO4 7 वाटर FeSO4 7 वाटर को काउंट ग्रीन विट्रल ब्लू कलर होछि CuSO4 5 वाटर व्हाइट विट्रल होछि ZnSO4 7 वाटर ए विट्रल गुडा का बहुत जरूरी विट्रल गुडा का बहुत जरूरी बार बार कहछि विट्रल गुडा का सब क्वेश्चन MCQ का बहुत जरूरी आ मन रखिथिबो ऑयल ऑफ विट्रल का concentrated H2SO4 is called oil of vitriol तारी सॉल्ट गुडा का जो कलर देखेबे सेटा को से विट्रल कहा जाय H2SO4 सल्फेट अछि आयरन सहित कले कोन हेतु आयरन सल्फेट 7 वाटर से कलर कोन ग्रीन तंगरी ग्रीन विट्रल एटा व्हाइट कलर देखो जे एडन तो ये व्हाइट विट्रल ये हला ब्लू कलर इन पानी रे 5टा वाटर लागिले तंगरी आपको कह दे छै ब्लू विट्रल हबा I think this much we have for today thank you all for your kind attention and patience जदे टिके ठीक ठाक रहिला टिके कमेंट बॉक्स रे चैट बॉक्स रे यस करो
ଆମେ ଏଠି କ୍ଲୋଜ କରିବା କ୍ଲାସ। କେହି ଆକ୍ଟିଭ ନାହାନ୍ତି? ଓକେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।